कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना तो पड़ता है, तो आज शुरुआत करें वैसे। हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। मार्केट क्या लगता है कि इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। व्हाट एन अमेजिंग वीक दिस हैज़ बीन। इंटरेस्टिंग रैलीज, इंटरेस्टिंग गैप अप्स and gap downs as well, and trying to trap retail for every move or every overnight positions they are taking. Now there is a certain weakness in the market structure for both the indices. Let's quickly go back and check what was our summary for the previous week. Now last week I had categorically suggested that Nifty, if it breaks below 14,418 level, then the next bearish target would be 14,200 and 14,142. And for Bank Nifty, if it breaks below 34,650, then the next bearish target would be 34,232 and 33,287. We saw intermediate bounce at the beginning of this week, and because of that bounce, the market again formed something that is called as a lower high. So hourly structure is defined, and then there was a tip as well in the previous week's study analysis. Remember, we are in a bull run, so don't be overly bearish. Trade based on these levels and the setup that you follow. So level ke basis pe, if the levels have not been breached for Nifty as well as Bank Nifty, then the view was not so bearish. Now what has happened? Let's quickly go back and check the WhatsApp message for the day. And now this is my today's message. One important update, we have started with the Telegram channel as well, and on the Telegram channel you get to see all these daily messages, some positional trades, and also certain concepts that we are going to discuss, and there will be periodic question and answer sessions. So do join that channel if you have not done so. So this is my morning message which was shared on the Telegram group as well, Telegram channel as well. So yesterday was a classic switch and bait. तो जो दिखाया गया था कि ट्रेड जिस तरह से जाने वाला है, एग्जैक्टली उसके अपोजिट चीज़ें हो रही थी. इंट्राडे रैपिडली चेंजिंग रेंज सजेस्टेड शिफ्ट टू अ पॉसिबल बेरिश टून इन यस्टरडेज एक्सपायरी. तो मिड डे पे मैंने ये मैसेज पोस्ट किया था ऑन दिस ग्रुप. दिस मैसेज वॉज नॉट देयर ऑन द टेलीग्राम चैनल. इंट्राडे टारगेट कैन फॉर निफ्टी 14,900 एंड बैंक निफ्टी द टारगेट कैन बी 35,300 एंड 35,200. ये 12 बजे का लगभग मैसेज था मेरा yesterday, that is थर्सडे के दिन का मैसेज था. एंड नाउ फ्रॉम देयर आर टूडेज मैसेज. सो दिस इज माई टूडेज मैसेज. यस्टरडेज डे वॉज अ क्लासिक स्विच एंड बेट. सो ये मिड डे पे जो टारगेट्स हमारे चेंज हुए, उसकी वजह से पूरे दिन का जो एनालिसिस था, स्टडी पार्ट था, वो पूरी तरह से चेंज हो गया. एंड देन एक बेरिश टोन कल की एक्सपायरी को टुवर्ड्स द एंड आ गया था. एज पर अवरली स्ट्रक्चर, इफ वी सी इंडाइसेस आर स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड. And if in today's session, if we see Nifty closing near target of 14,900 and Bank Nifty near target of 35,300 or 35,200, and if these levels are broken today, then we are looking at a move downside. So कुछ targets की मैंने बात की है. Nifty का target would be 14,500 and Bank Nifty का target would be 33,700. and ये targets हमारे possible है जब हमारा current जो सपोर्ट लेवल या करंट जो टारगेट्स है वो कंप्लीट हो गए. नाउ आई एम हैप्पी टू नोट दैट ये दोनों टारगेट जो है, निफ्टी 14,900 एंड बैंक निफ्टी 35,300 एंड 35,200, ये दोनों टारगेट जो है वो कंप्लीट हुए हैं. आज का जो लो है वो इंडाइसिस का लो उसी तरह से बन के फिर वहाँ से एक बाउंस हमें देखने के लिए मिला है. नो क्विकली इफ वी कम बैक हियर ऑन द चार्ट्स, सो वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई वांट टू शेयर विथ यू इज दैट लास्ट ये जो पूरा वीक था, ये वीक में ट्रेडिंग करना उतना आसान नहीं था, राइट. विक्स वेर हाई एंड बिकॉज द विक्स वेर हाई द ऑप्शन प्रीमियम्स वेर अननेचुरली हाई. सो इफ़ यू आर रिलेटिवली फ्रेशर ट्रेडर्स, अगर आपने लॉकडाउन के फेज में ट्रेडिंग शुरू की है, सो यू कैन स्किप दिस पार्ट जहाँ पे भी यू सी दैट द विक्स आर इंक्रीजिंग, द प्रीमियम्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव. सो यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड फोकस वंस द ट्रेड सेटल्स. सारा ट्रेंड सेटल होने के बाद फिर आप फोकस कर सकते हो. या इफ़ यू फील लाइक यू मस्ट ट्रेड, देन यू ट्रेड विथ वन और टू लॉट्स ओनली. सो करंटली ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, विद दिस स्ट्रक्चर द लोएस्ट पॉइंट दैट इट मेड टुडे
is 14,862, which is beyond our level of 14,900. Now this is one important level, and from this level all I can see is that निफ्टी में अगर हमें ये लेवल के ऊपर प्राइस जाती है, दिस इज लाइक अ हायर लो दैट हैज बीन फॉर्म्ड, एंड इफ आई हैव टू बिलीव दिस फ्रॉम दिस लेवल वी विल बी सीइंग अ बुलिश ट्रेंड. तो हमें एक बुलिश ट्रेंड यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, एंड देन विद दैट बुलिश ट्रेंड वी मे सी दैट द प्राइस will reach out to 15,000, almost 492 you can say. So this can be our bullish target for this particular week. So 15,492 is my target for the coming week. Now this target is possible as long as this low, today's low, is being held. अगर ये low break हो जाता है, if the price closes below this, then we might turn again bearish. The bias would turn again into a bearish bias. But you can make note of these targets and mark these targets on your chart. Quickly going to Bank Nifty, and even on Bank Nifty the structure seems weaker than Nifty, but अगर हम hourly पे देखते हैं, so even here this was one important support, और उस support के चलते हुए यहाँ पे price ने it has formed a higher low again here. So from this level if we get to see the price action, तो naturally हमारा जो target है, अगला जो target है, as long as this low, today's low is intact, we can see a target of, let's say, 36,943. This can be one of the target for Bank Nifty. So this level of 36,943 ये एक target होगा for Bank Nifty. Okay, so this is my bullish target, and only if this low is broken on the downside, then we might turn bearish. फिर हम bearish बनेंगे, और जो previous week के हमारे target थे उन targets के तौर पे हम जा सकते हैं. But as far as I can see, I feel that as long as this low is protected, we'll have a bullish bias from here. So these are the aspects that we have to keep into our mind. Most important two updates. We have International Women's Day on Monday. So we'll be sharing some of our success story, independent woman trader who are also career oriented women, who are also managing their responsibility, their household responsibilities as well. And also they are an investors or traders. So I have huge respect for all women, independent women who are focusing on their financial goals as well as managing their career. They're managing their household responsibilities and everything they're taking care of. So it's in a way multitasking, and in a better way multitasking. Financial planning या उन सभी चीज़ों पे भी ध्यान देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड women today, they are doing it exceptionally well in a very meticulous manner. So hats off to you all, and we are going to celebrate this Women's Day on Monday, and then there is a midweek holiday on the account of Mahashivratri. So whenever we get a holiday in between the week, so this weekly expiry is going to be on Wednesday, a day prior to the holiday, and I'm expecting that Monday, Tuesday, Wednesday, 3 दिनों में से एक जो दिन है वो एक super trending दिन हमें देखने के लिए मिलेगा. So let's look forward to it, that action as well, but keep in mind that we have a truncated or a smaller expiry this time around. So trade with caution, don't have a super bearish bias, guys, and trade as per the levels. If you do not understand what is happening in market, stay away from this market, right? As the wicks are high, the option premiums are higher, and it becomes tricky for the new traders to take and hold the position. So you stay away from F&O for some time, and the moment you get a clarity in trend, you can just participate whenever you feel comfortable, right? So enjoy your trading time ahead. I'm signing off. Thank you so much.